हेलो बच्चों, आज हम पैसेज 8 जो है सीसैट 2012 का लास्ट पैसेज वो सॉल्व करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल रीड द पैसेज. इन अ टिपिकल वेस्टर्न लिबरल कॉन्टेक्स्ट, deepening of democracy invariably leads to consolidation of liberal values. So underline these lines. In the Indian context, democratization is translated into greater involvement of people not as individuals, which is a staple to liberal discourse, but as communities or groups. Individuals are getting involved in the public spheres not as atomized individuals, but as members of primordial communities drawn on religious or caste identity. Community identity seems to be the governing force. It is not therefore surprising that so-called peripheral groups continue to maintain their identities with reference to the social groups, caste, religion or sect to which they belong, while getting involved in the political goals remain more or less identical. By helping to articulate the political voice of the marginalized, democracy in India has led to a loosening of social structures and empowered the peripherals to be confident of their ability to improve the socio-economic conditions in which they are placed. This is a significant political process that had led to a silent revolution. Again, underline last line. This is a significant political process that had led to a silent revolution through a meaningful transfer of power from upper caste elites to various subaltern groups within the democratic framework of public governance. Now we have finished passage reading. First question, according to the passage, what does deepening of democracy mean in the western context? तो deepening of democracy का जो मीनिंग है वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कंसोलिडेशन ऑफ ग्रुप्स एंड क्लास आइडेंटिटीज़. तो ये तो गिवन है पैसेज, लेकिन ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताया है, इसलिए हम इसे कैंसिल कर लेंगे. ये जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट डेमोक्रेटाइजेशन इज ट्रांसलेटेड In the Indian context, democratization is translated into greater involvement of people not as individuals, which is a staple to liberal discourse, but as a communities or groups. तो ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है बताया, इसलिए हम इसे कैंसिल कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे. सेकंड है डेमोक्रेटाइजेशन ट्रांसलेटेड एज ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल. तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है और ये गिवन है पैसेज में कि ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, और ये भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है, इसलिए इसे भी हम एलिमिनेट कर लेंगे. नाउ वी हैव सी एंड डी. तो आफ्टर एलिमिनेटिंग ए एंड बी we have C and D. C option is democratization as greater involvement of atomized individuals in the public sphere. This is given in the passage, so we can say this कि deepening of democracy meaning in the western context is democratization as greater involvement of atomized individuals in the public sphere. So we can eliminate D option, क्योंकि in the Indian context, democratization is translated into greater involvement of people not as individuals, which is a staple to liberal discourse, but as communities or groups. Individuals are getting involved in the public spheres not as atomized. कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया कि इंडिविजुअल्स जो भी इन्वॉल्व है पब्लिक स्फीयर में वो एटोमाइज्ड इंडिविजुअल्स नहीं है, बट एज अ मेंबर्स ऑफ प्रीमॉर्डियल कम्युनिटीज ड्रॉन ऑन द रिलीजियस और कास्ट आइडेंटिटी. इसका मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो पब्लिक स्फीयर में इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है वो एटोमाइज्ड नहीं है, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इन्वॉल्व है. इसका यही मीनिंग निकलता है कि एटोमाइज जो है फिर वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में है कि जो भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है पब्लिक स्फीयर में वो एटोमाइज्ड है वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के लिए, क्योंकि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए एटोमाइज्ड नहीं है. तो इसका अपोजिट व्यू ये है कि एटोमाइज्ड इंडिविजुअल्स फिर वेस्टर्न लिबरल कॉन्टेक्स्ट के लिए है पब्लिक स्फीयर में इन्वॉल्व. तो इसीलिए हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट आंसर है, डेमोक्रेटाइजेशन एज अ ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटोमाइज्ड इंडिविजुअल्स इन द पब्लिक स्फीयर. सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन इन इंडिया हैज़ नॉट नेसेसरीली लेड टू the dilution of caste and communal identities in the public sphere. This is not given in the passage, so eliminate this option. Second, irrelevance of community
identity as a governing force in the Indian politics. This is given in the passage. And marginalization of elite groups in the society, eliminate this option, this is not given in the passage. Relative on importance of hereditary identities over class identities, this is also not given in the passage, so eliminate this option also. So irrelevance of community identity as a governing force in the Indian politics. So the greater democratization in India has not necessarily led to community identity seems to be the governing force. So our B option is the correct answer for this question. Irrelevance of community identity as a governing force in the Indian politics. Last question. What is the silent revolution that has occurred in Indian democratic process? So first statement is irrelevance of caste and class hierarchies in political processes. Out of scope of the passage, eliminate this option directly. Loosening of social structures in voting behavior and patterns. This is given in the passage, but it is not for the silent revolution, so eliminate this option. Social change through transfer of power from the upper caste elites to subaltern groups. So this is given in the passage, so we can eliminate D option also after eliminating A and B. So loosening of social structure by helping to articulate the political voice of marginalized democracy in India has led to a loosening of social structure and empowered the peripherals to be confident of their ability to improve the socio-economic conditions in which they are placed. So ये साइलेंट रिवोल्यूशन के बारे में नहीं बोला गया है लूजनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कि मार्जिनलाइज्ड हेल्पिंग टू आर्टिकुलेट पॉलिटिकल वॉइस के बारे में बोला गया है, इसलिए ये जो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन वो इलिमिनेट हो जाएगा. सी ऑप्शन है सोशल चेंज थ्रू ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम अपर कास्ट एलाइट्स टू द सबअल्टर्न ग्रुप्स. दिस इज गिवन इन द पैसेज कि दिस इज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्रोसेस दैट हैड लेड टू साइलेंट रिवोल्यूशन थ्रू अ मीनिंगफुल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द अपर कास्ट एलाइट्स टू द वेरियस सबअल्टर्न ग्रुप्स विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ पब्लिक governance. So this is directly given in the passage. So our C option is the correct answer for this question. Hope so all of you understood well. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And do not take burden, learn with fun, enjoy learning, and thanks for watching. We will solve next CSAT 2013 paper in the next lecture. So stay tuned with me and enjoy learning.